सोच के जायके के साथ सारा आमिर और नीलम अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। रिवायत के मुताबिक लेकर आए हैं फिर से वही रेसिपी जो झटपट बन जाती है और बहुत डिलिशियस भी होती है, स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन देख रही थी तो ये 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मुझे लग रहे हैं चिकन में जाने वाले हैं, और किस तरह से जाने वाले हैं और किस तरह से होने वाला है वो चलिए सारा से पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ मज़ेदार सी चीज़ लग रही है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नीलम, I'm good, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सोच पे एक बार दफ़ा फिर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रेसिपी शुरू करने से पहले सारा एक खुशखबरी देना चाहूँगी व्यूअर्स को और आपको। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। और वो ये है कि जो पिछली रेसिपीज़ हमने बनाई थी ड्रैगन चिकन और चीज़ी वेजी डिस्क, वो हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है और उन्होंने घर में ट्राई की है और बच्चों ने भी बहुत पसंद की है, तो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। बहुत खुशी की बात है, आई एम रियली हम्बल्ड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि लोगों ने पसंद किया और it was convenient for everybody to try. Most of the ladies have also posted some good reviews on it. Yes. So thank you so much, Neelam. Very good news to start our next show. Our next show, definitely. So first, hello SOCH viewers, Sarah Aamir here again. और जैसे कि नीलम ने अभी आप लोगों को डिस्क्राइब किया, this recipe is about stuffed chicken breasts, and I have 3 different versions of that. So मैं आपको आगे चल के I will continue on describing it in more details, but I have 3 different ways for this stuffed chicken breast to be prepared. So first, let's watch our recipe card and then we'll come back. So we can start the marination. Here I have viewers and Neelam is the 3 pieces of chicken breasts. तीनों की marination is same. I would say कि I have 3 different, like I said before, there are 3 different stuffing recipes, but the marination is going to be the same for our ease. Okay. So I'm going to marinate all 3 breast pieces together. अच्छा, ठीक है, और ताकि one time we should be done, और उसके बाद we can continue with different stuffing. अच्छा, तो ये है कि जो हमारी मैरिनेशन होगी वो तीनों ब्रेस्ट की सेम होगी, सिर्फ स्टफिंग हमारी डिफरेंट। परफेक्ट, ताकि हमारे लिए भी convenient हो. Right. So for the marination ingredients, viewers, I have olive oil, 2 tablespoons, fresh lemon juice, 2 tablespoons, paprika, 1.5 teaspoon, I would say roughly, oregano, 1.5 teaspoon, garlic powder, 1.5 teaspoon, and onion powder, 1.5 teaspoon, black pepper, 1 teaspoon, salt, 1 teaspoon, and some toothpicks for skewing it. I'll show you. Just to pack it up. Okay. Okay? Perfect. So let's start the marination here. I'll start with the fresh lemon juice. And make sure one thing. I have to cut open the breast pieces from the middle. से इसको काट लेना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको पहले ये करना पड़ेगा क्योंकि breast pieces just come in a complete packed one. Right. So आप इसको sharp knife से you have to slit it from the middle. सही। So that you can easily stuff it in. So which has been done already. अच्छा, ठीक है? So let's start. Lemon juice, paprika, oregano, salt, black pepper, garlic powder, and onion powder, and some olive oil in the end. सारा यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि हाँ, अगर हमारे पास गार्लिक पाउडर नहीं हो तो हम गार्लिक पेस्ट यूज कर सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अक्सर घरों में गार्लिक पेस्ट ही होता है, राइट? गार्लिक पेस्ट बिल्कुल चलेगा, मिन्स चॉप्ड फॉर्म भी चलेगा, पेस्ट बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल। Absolutely, you can always alternate it with a chopped or garlic paste. और इसको हम कितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे? At least 30 minutes minimum. If it's overnight, which is a very good option always. लेकिन अगर 30 minutes आप minimum तो दें आप इसको at least. जी हाँ. So let me marinate this well. So we have our marinated chicken, which has been sitting for 30 minutes minimum. Overnight is of course desirable, but at least 30 minutes is required. इसके लिए 30 मिनट तो आप प्लीज इसको जरूर मैरिनेट करें। मसाला अंदर चला जी हाँ, बिल्कुल, जो कि हम दे चुके हैं। So let's start marinating. I'll pick one first chicken breast piece. जैसे कि मैंने पहले बताया था, they're open, slit from the middle.
And since I have 3 different stuffing recipes here, the first one I'm going to go with is my cream cheese, jalapeno peppers, not too finely chopped, but medium chopped, and some Kobe Jack cheese, which I'm going to mix it up and I'm going to stuff it in. और इसके साथ फिर I think I have to get bacon, and which I'm going to add it later on. Okay, Just a second. So a little bit of cream cheese, jalapeno peppers. Mix it well. Make sure कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखें ताकि ये इजी हो आपके लिए करने में। जी हाँ, जिसको मैंने छोड़ा हुआ था काफ़ी देर से। अच्छा। So please make sure that your cream cheese, your other cheeses are on room temperature before you start the marination and stuffing process. I think this is pretty good. अच्छा, इस तरह से इसमें हम पूरा जी हाँ, बिल्कुल. And you do have a margin. It doesn't have to be very quickly because it's going to all going inside. And it's going to be packed and wrapped with my turkey bacon. सही. Just like this, really. Try to move it out. Then I'm going to shred some cheese. Cheddar cheese. देखिए व्यूअर्स, तो अभी से ही कितना मज़ेदार लग रहा है, और मेरे ख्याल से जब ये बेक होगा और उसकी चीज़ मेल्ट होगी साथ में, तो वो और भी मज़े का लगेगा, राइट? And it totally depends on you. Cheese is something I would not say that this should be limited. Of course, that's my favorite ingredient. I know, right? सबकी actually. Definitely. So sprinkle as much as you want. आप जितना चाहे अपनी मर्जी से डालें. So now let me get bacon wraps quickly, and then I'll wrap it up and I'll show. Okay. So as you can see, this chicken breast has been stuffed with my cream cheese, jalapeno, and Kobe Jack or cheddar cheese of your choice. The last part is to wrap it with some turkey bacon or whatever of your own choice. So, and which is very easily available in the market. You can get these bacon strips. बिल्कुल, absolutely. आप बड़े आराम से दस्तयाब हैं ये, हर जगह से मिल सकते हैं. With the help of toothpicks. समझ में आया आपकी टूथपिक का राज. जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर तो ये काम नहीं चलेगा. बेकिंग प्रोसेस में it's going to leave. So make sure कि enough toothpicks लगाएं, मगर उससे भी ज़्यादा important point है, make sure to take off these toothpicks while you're serving, because they're not yummy. I have tasted them and they're not yummy, so don't forget to take your toothpicks off. But they're अक्सर जलिए की जी हाँ, तो हम रख लेते हैं सामने, जी हाँ, so okay. Thanks for mentioning this. I think हमारे viewers के लिए बहुत tip है रहेगी. क्योंकि I think after baking they're now very visible. मुझे खुद दिखाई नहीं दे रहे थे, नजर नहीं आए. वो चीज वगैरह और उसका golden color और वो सब, right? Yeah. So I have learned my lesson the hard way. So that's why I wanted to give this as an extra tip for the viewers. Please make sure you remove your toothpicks. They are helpful, but not while eating. So okay, as you can see, I hope आप लोगों को नजर आ रहा हो कि it's pretty ready and pretty safely wrapped and packed for the baking. चल, हम इसको साइड पे रखते हैं. Let me grab another one. Okay sir, एक क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए करना चाह रही थी कि कितनी होंगे, लाइक कितने टीस्पून या टेबलस्पून? हाँ, अमाउंट. Well, this recipe की खास बात है कि it doesn't have to be any particular amount. You can have a free hand, as you can see. आप अंदाजा लगा सकते हैं. It's roughly about 2 tablespoons of feta cheese, 2 tablespoons of mozzarella, few baby spinach leaves which I have cut in 3 parts, or some not couple, I would say roughly about 6-7 pieces of sun-dried tomatoes. Right. I mean whatever is sufficient for one recipe. ठीक है? और इसमें से जो हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहें. Oh, बिल्कुल, absolutely. Right? Completely your choice. Whatever ingredient you like more, you can definitely play with it. That's the good part about this thing. Let's have a free hand. If you wanted to deduct something, take it off. Add something else, you can do that as well. Okay, that's why there is a reason I'm not being very particular about the amount, like with the. But this is roughly about what I've just mentioned. Sahi. Okay, let's start. So first, I would start with my spinach leaves because I don't want them to slip up. Right. So I think you should start with something which is more slipping away. So I mean you can stuff it up or take it in. Under those other ingredients. और viewers आप जानते ही होंगे कि ये spinach जो है, it's a very good source of iron. Absolutely. तो और especially baby spinach बहुत ही healthy होता है. So I think it's very good. Absolutely.
So if we are having cheeseburger, everything in a good amount is never bad, or it's always healthy. Right. We do have cheese, but in a certain amount. Right. But we are having some baby spinach leaf and sun-dried tomatoes. Or imagine case pressed pizzas which we are going to bake. So it's a healthy. It's a healthy. Yes. Oh, And which has been a request from some of my viewers that they wanted a quick but healthy answer. So this time that's the reason I came up with 3 different varieties for stuffing your chicken breast, depending that what you like. So this is the second one, so let's go for it. Very good. Baby spinach is done, sun-dried tomatoes. Now I'm going to put some of the feta cheese. And then in the end, I will place some mozzarella. और I'm sure जब बेकिंग के बाद जैसे मैंने पहले कहा बहुत जब अच्छा ये निकलता मेल्ट है। होगा Oh, तो yes. ये बहुत ही All those अच्छा tastes, निकलेगा। yes, absolutely. बहुत अच्छा एसेंस इसका निकल कर आता है because it melts and it bakes and it cooks all the way. So let me go ahead, and I think this is sufficient. So let me go ahead and pack it up with toothpicks. That's the trick. तो अंदर से जरा दबा के हाँ, बिल्कुल थोड़ी मेहनत दरकार होगी जी हाँ। इसे दबा कर और You have to फिर pack it up, thank you. से राइट और फिर वही हमारी टिप के टूथपिक जो है वो निकालना मत भूलिएगा जब आप उसको जी हाँ, बिल्कुल पेश कर रहे हो जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। जी अच्छा जी, put it up. और टूथपिक लगाते वक्त भी ध्यान रखिए व्यूअर्स कि ये आपको कहीं चुभ न जाए जी हाँ, क्योंकि please be ये careful. pointed होती है Please be careful. yeah so be very हाँ, careful जी, while बिल्कुल। putting it Yeah. and while serving it Yes, because if something happens, you have to yeah throw this especially away. अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो you have to be very बिल्कुल। careful right बिल्कुल। क्योंकि बच्चे फिर आपको पता है इसको छोड़ के वो टूथपिक से खेलना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा जी। So as you can see, wow it's nicely packed. I use Right. roughly about 5 to 6 toothpicks. So wow it's nicely done. So let's put it in the tray for the second one to be ready, and we'll grab the third one, our last one. So here comes our third one and the last one for the stuffing. So let me point out the ingredients. इसकी ये हमारी third वाली है recipe. Okay. So here we have is Parmesan cheese, grated corn, there's some ricotta cheese, some parsley leaves, some olive oil, oregano, salt, and those deli style. But I have choose. You can choose the habanero peppers or red peppers of some form. I have chosen the deli style bell pepper smoked form. okay And some breadcrumbs. Okay. So आगे चल के मैं आपको बताती हूँ. So let me go ahead and continue start stuffing. और मैं आपको बताती हूँ how it goes. Okay. right So first I would like to, since we have some salt and oregano, so let's mix it first. So it's more convenient. easier to Right, do. absolutely. So I'm gonna, सही I just mixed the Parmesan into the ricotta, my red peppers, salt, very little salt, a pinch kind of, and same goes with the oregano. Achha. I have to save this olive oil, which is about 1 tablespoon, Okay. and breadcrumbs for the end, and then I'm going to garnish this. But let's make this a paste. okay I hope you guys can see clearly. और जैसे व्यूअर्स मैं इस वक्त एक चीज देख रही हूँ कि तीनों चिकन स्टफ है लेकिन तीनों अपने आप में एक अलग अलग स्टाइल की है जी बिल्कुल। जैसे एक को बेकिंग में हमने रैप किया एक को हमने प्लेन ही रखा है और एक अब हम ब्रेड क्रम्स करेंगे तो ये तीनों स्टफ है लेकिन तीनों अपने अंदाज में अलग अलग चीजों से कोटेड हुई है तो दैट्स अनदर एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जैक्टली सो आई मीन इट डिपेंड्स कि किसकी प्रेफरेंस क्या है और इसके लिए आपको तीनों पहले बना के देखनी होगी और फिर आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बताना खिलाना होगा और फिर देखें उनको तीनों में से कौन सी पसंद है मेरे घर में पर्सनली फेवरेट वाज द बेकन रैप ओके one the turkey bacon wrap. So I mean it's just our thing, but of course hey it's pretty convenient, so आप कुछ भी try कर सकते हैं try कर सकते हैं. All you have is the right ingredients. Okay, so as you can see I have transferred all that stuffing into the chicken breast. Let me garnish some parsley leaves, fresh ones, and let's pack it up well now with the toothpicks. तो सर इसके लिए चिकन ब्रेस्ट का साइज इतना बड़ा होना लाजमी है कि नहीं बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, छोटे भी। हाँ मैं चाह रही थी कि एक
certain serving हाँ, नजर आए, right, नजर आए, so that's right. why I picked these. लेकिन ये सारे हाँ, अमूमन आई थिंक दावतों वगैरह के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेकिन घर में अगर हम बनाओ तो छोटे में बना सकते बिल्कुल हैं। नीलम, ये it's a larger serving, Right. so अगर आपको थोड़ा या each individual serving लेनी है, please get the तो smaller छोटे ones में। because you can do the same thing with it. It all depends. मैं इसलिए क्लियर करना चाहेंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि नहीं, कहीं वो देखते हुए ये ना सोचे कि छोटे में स्टफ नहीं होगा, नहीं, absolutely, लेकिन बिल्कुल होगा। सारा से इसके छोटे में भी वो स्टफ हो जाता है, तो इट्स जस्ट लाइक आपको सही से बीच में से उसको कट करना जरूरी है। बिल्कुल। Some people even prefer to press the meat with the pastry roller or something, Right. or a meat hammer. ताकि वो थोड़ा flat हो जाए। हाँ, मैंने नोट किया है। अच्छा। Some people prefer that. I didn't want that. अच्छा। मगर it's nothing wrong with that. You can also do that. If you अच्छा। want to press the meat a little bit, it's less chunkier. मगर आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा। मैं ये भी बताती चलूँ। So देखिए, ये पैक हो चुका है हमारा। Right. See, you're gonna put it in the breadcrumbs to cover it. So अच्छे से completely. Doesn't matter if something is falling off, it is fine because हमारे पास enough stuffing है अंदर. So if अच्छा। something falls off, it's completely That's fine. completely fine. Yeah, we put more than enough anyways. मगर make sure कि ये अच्छे से covered हो जाए. जी हाँ, बिल्कुल. So you want सर all. आप इसके लिए कौन से ब्रेड क्रम प्रेफर करती हैं? बिकॉज़ अक्सर मैंने ब्रेड क्रम थोड़े मोटे-मोटे से देखे हैं। अच्छा, more chunky है? Yeah, this is अच्छा। a bit finer, looking finer to me. हाँ, no, I always get these. It's just I had from from the this grocery one. store. I get they have different seasonings, Parmesan seasoning Right. or Italian seasoning, but I think that this is the regular Okay. any brand breadcrumbs from our Regular. regular grocery store where we all go. You all know. Acha. So this is all covered. Wow. It's gonna join the team. So as you can see here, we have is 3 kinds of stuffed chicken breasts. One is the bacon wrap, turkey bacon wrap I did, which my stuffing was cream cheese. Here I had the mozzarella sun-dried tomato stuffing, which is plain, not wrapped with anything. The breadcrumbs is another one, the third one, which we did with some ricotta cheese and Parmesan cheese. So what I have to do is the last touch is to drizzle some. In fact, you know what? Let me put it in the tray. So as you can see, all 3 different breast pieces are stuffed and ready to be baked, Neelam. Yummy. So Chanel, let's place them in our baking pan, which is already greased. Okay. Yours. Baking pan ले लें. अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि each chicken breast piece, if I'm doing it individually, आज तो of course I had to show it to the viewers, so I had to do all 3, but usually ऐसा नहीं होता. आप एक बनाते हो. If you're Right. making a single one, I would say the timing is to bake around 40 to 45 minutes on 180 degrees Celsius or Okay. 350 to 360 degree Fahrenheit. Okay. And for all 3, it's going to be around more than 1.5. More ठीक है? than okay, ठीक है. So in the very end, let me drizzle some olive oil on the breadcrumb ones. ताकि वो बिल्कुल dry नहीं हो बिल्कुल, जाए, right? absolutely. It needed it. मैंने पहले से इसलिए नहीं डाला कि I didn't want it to soak in too much. Okay. Now we can pop it. Our oven is already preheated, so I'm going to pop it in the oven. और व्यूअर्स ये हमारे स्टफ चिकन ब्रेस्ट जा रहे हैं अवन के Drill अंदर them. बनने के लिए और अब हम इसको रखेंगे. Like I said before, each per chicken breast piece should be 45 minutes. मैं इसको hour and 30 minutes रख रही हूँ because I have 3 in there. 3 in that. Okay, and 350 F Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Okay, so here you go. I just took it out from the oven, and I think it's ready to serve. रेडी सर और जी हाँ, क्या ख्याल है नीलम? बहुत जबरदस्त और यमी लग रहा है और तीनों का टेक्सचर अपने आप में बिल्कुल। इतना अच्छा लग रहा है और मुनफरिद है, और मुनफरिद है, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है, ये different सबसे taste खास buds. बात है. This is for the टेस्ट breadcrumbs, वाइज भी और bacon देखने wrap के and लिहाज से plain. भी बिल्कुल, जबरदस्त, हर एक का बहुत different अच्छा. taste bud है. Everybody have different Right. choice and taste buds, so it's accordingly to everyone. So it depends which matches your choice. Choice, तो very good. जी हाँ, so let's try it. Let's try देखना Okay, व्यूअर्स को कि ये अंदर से किस तरह से बिल्कुल, cook मैं आपको होगा, right? ज़रूर हाँ बिल्कुल. Let me cut it off for you, and then as we can see. And I'm trying to cut it open so that I can show it to you how the stuffing came out from the middle. Wow. बहुत जबरदस्त. जी हाँ, all 3 different palates, different choice. Right.
वाकई में बहुत ही टेक्सचर के हिसाब से भी और देखने के हिसाब से भी बहुत जी अच्छा हाँ। लग रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हमारे व्यूअर्स इसे दावतों में बना दे तो ये बिल्कुल नई चीज़ बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। राइट? अक्सर हमारी दावतों में सेम चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। तो अपनी और- दावतों और- में इसे ट्राई कीजिए। बिल्कुल। और अगर जैसे कि आप यू वाचिंग फॉर कार्ब्स और समथिंग और वेट समथिंग, यू Oh, कैन yeah. आल्सो ट्राई दीज। Right. कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू वांटेड टू वॉच योर डाइट और चेंज योर लाइफस्टाइल इट हैज़ टू बी लेस यमी, यू कैन स्टिल हैव अ यम्मिलिशियस recipe Right. with along with health watch. Right, Okay? definitely. Because I think I got a request that somebody wanted something a bit healthier but has to be yummy. So Okay. here you go. You have 3 different varieties, and this is how the stuffing is looking. I hope it's Yeah. coming out good. This Oh, is yeah. our breadcrumb one. This is our plain one, sun-dried tomatoes, and this is our bacon turkey wrap. bacon wrap. You can see all that. अच्छा, इसका एक और है कि you can cut them into slices for serving purpose. राइट, फॉर सर्विंग। जी मैं हाँ। आपसे एक्चुअली यही पूछना चाह It's रही थी कि easily. अगर exactly If you don't क्या- want your right, guests to right. do that, you can certainly do it. जैसे कि हम अभी सर्व करेंगे हमारी होस्ट नीलम को। वाओ, Yeah. आई थिंक आप कर बताएं हमें। बिल्कुल, मैं तो खाने के लिए अभी से एक्साइटिंग बैठी हूँ और ये इतना यमी लग रहा है मुझे चीज़ के साथ। और ये मैंने खाया इसको, How is it? बहुत ज़बरदस्त है और Evenly इसमें cooked? इवनली कुक भी है और इसमें एक्चुअली चीज़ का जो साथ जो मैरिनेशन का जो टेस्ट आ रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तीखा भी है और बिल्कुल बेक भी है और बहुत सही से बना हुआ है। व्यूअर्स, इट्स रियली डिलिशियस। वाकई इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हमने जो है वो बनाया है, इसलिए नहीं। आप खुद ट्राई कीजिए और खुद हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा है वाकई में। Thank you so really, much. Really, very Thank you nice. so Good much. job, And I Sarah. hope you all like it. बिल्कुल। Please let us know if you have any concerns, any questions, queries about the recipe or any other steps. And if you want to make an alternate, I'm Neelam and I will be more than happy to answer. Definitely, Please. viewers. I hope आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। Thank you, Sarah, so much for Thank you giving very us much for such a having me. delicious and healthy recipe. और देखते रहिए आप हमारे अगले प्रोग्राम को। इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज जानने के लिए देखते रहिए सोच के जायके।